अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है आई वाज़ ऑन माय नाइट ड्यूटीज़ और नाइट ड्यूटीज़ के बाद मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कि अभी बहुत मुश्किल से मैं वापस रूटीन पर आई हूँ और वीडियो एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ड्यूटीज़ ही कुछ इस तरह की पैटर्न पे आ गई कि शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक और वो आपके पास सुबह के 5 बजे हुए होते थे जब मैं ड्यूटी ख़त्म कर रही थी। और अभी होपफुली अब से ऑनवर्ड्स आई ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर विद द अपलोड्स बिकॉज मेरे पास कुछ फ्री टाइम होगा, कुछ तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम आने वाला है। आई बी हैविंग ऑन माई हैंड्स, तो आई बी अपलोडिंग होपफुली रेगुलरली। और आज मेरा ऑफ था और मेरे पास घर में स्नैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, प्लस आई नीडेड सम फ्रूट्स। और स्नैक्स मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी चाय कॉफ़ी स्नैक्स के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर कुछ स्नैक्स लेकर आए जाएं, कुछ फ्रूट्स लेके आए जाएं। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी वॉक पर निकली थी। यहाँ पर मैं वॉक करके घर की तरफ वापस जा रही हूँ और घर पहुँचते मैंने बस फिर गाड़ी निकाली और मैंने कहा कि चलें डंस पे चलते हैं। और मैंने सोचा कि आप सबको भी साथ लेकर चलूँ और यहाँ का स्टोर आपको भी अंदर से दिखाऊँ। मेरे घर के करीब जो बहुत करीब तरीन है वो डन स्टोर है। आई थिंक ये 10 मिनट की वॉक पर है, बट आई प्रेफर टू ड्राइव टू द स्टोर क्योंकि आपको पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। कुछ जगहों से उतराई आती है, आई डोंट माइंड उतराई, लेकिन आई वाज़न्ट फीलिंग दैट वेल। और नाउ आई हैव अ रीज़न एंड यू विल सी यू विल हेयर दैट इन द नेक्स्ट व्लॉग कि मैं ड्राइव करना क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रही थी। तो एनीवेज आई ड्रोव टू द नियरेस्ट स्टोर और वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स लिए। आई गॉट फ्यू स्नैक्स। जितना मैं इस घर से सोच के गई थी कि मैं बस स्नैक्स भर कर लाऊंगी, वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि आई शुड बी गोइंग फॉर इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल और मैं थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक खानों की तरफ आऊँ। तो आई वेंट विद फ्रूट्स मोस्टली। और अभी नेक्स्ट आप देखें व्लॉग और शॉपिंग क्लिप्स के बाद देन आई विल बी शोइंग यू कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। सो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर करें, अपनी फ्रेंड लिस्ट के साथ भी शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक यू। हाँ जी, ये मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। मैंने अभी तक गाड़ी का ये नहीं उतारा है, मैं ऊपर जाके उतारूँगी। तो मेरा जो टोटल बिल बना है, इट्स नॉट अ मंथली शॉपिंग। एक मिनट में कैमरा ठीक करूँ। हाँ जी, इट इज़ नॉट अ मंथली शॉपिंग. It's more like when you're getting bored or you want to get out of the house, you want to go for shopping. So it's that kind of it was that kind of a trip. मैंने कुछ snacks लिए हैं and then I was actually wanting to go for कुछ Pringles and chips and cupcakes, and when I reached there I felt a bit ashamed. Like, why should I be going for such unhealthy stuff? So I went for some turmeric shots. कुछ fruits लिए हैं मैंने
and I ended up getting some chips, but not the, you know, like the original junk that I was wanting to go for. I was out, I was really short on my pace, so I got this one. And then these shorts, because lately I've been having allergies. I don't know why, but for last 7 months I'm literally struggling with allergies, and turmeric has always helped, like with everything as far as I think. And I don't want to start antihistamines, although I'm taking a lot of those at the moment, on and off, not regularly, but still I think the natural stuff, it affects really good. I got some blackberries. Then I got blueberries. I got some muffins, like my daughter knows what they are exactly called, cupcakes or muffins, I don't know. These kids, इनको पता है इसके बीच में डिफरेंस क्या है. मेरे लिए हर तरह के जो इस साइज़ के होते हैं वो कपकेक ही हैं या मफिन है, whatever she tells me I go with that. Then I was too lazy to get a full pineapple because मेरे से नहीं काटा जाता, so I went with this one, और I think हम लोग को बहुत होगा. Oh, then I went with these grapes. I thought I got green ones, but yeah, I got these and they are also really good. And I got ice cream, although I do have a big box in my refrigerator. वो Duns का I think vanilla है, and I don't like vanilla flavor anymore, or maybe it's just these days with allergies I don't like it. और ये bag, yeah, they did ask for this bag as well, जो कि मेरी अपनी गलती है. मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में हमेशा बैग्स रखे हुए थे. आई डोंट नो, मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं गाड़ी से निकाल के लेकर जाऊँ. और उसके बाद तो मैंने ऑलरेडी सारा कुछ ले लिया था, एंड आई वाज पेइंग एट द काउंटर, एंड आई थॉट कि अब मैं क्या वापस जाऊँगी गाड़ी से बैग निकालने. और बैग्स को मैंने सबको यहाँ पर स्टोर किया होता है. तो ये है मेरी शॉपिंग. इट कॉस्टेड अराउंड 38.69, and I end up getting €5 का voucher, which is for the use for next time, जो कि मुझे 7 दिन में यूज़ करना है. But I think I have already wasted vouchers like तकरीबन €150-200 के मैंने voucher waste किए, because my groceries, they don't end up like within a week, and so I always like all of these vouchers, they go in waste. So ये जो जिन शॉट्स हैं, turmeric shot with buckthorn berry, lemon and cayenne pepper, or this one is beetroot shot with ginger and cinnamon. I have taken a lot of these before, so I know the taste, but I have never tried this one. So this is it, and these are really effective. I'm telling you, these are really effective. So I'll be doing a taste test on the camera. Okay, it's not bad. थोड़ा सा गले में जल रहा है, but I don't know कि वो मेरे एलर्जीज की वजह से है या क्या, but the taste is, it's bearable, it's tolerable. मेरा कार्ड फिर सीधा हो गया है. मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर इस पे कोई ना कोई स्टिकर पेस्ट कर देती थी, बिकॉज it has the code for entrance throughout the hospital. उसके अलावा इसके ऊपर मेरा डिपार्टमेंट, मेरा ग्रेड, everything is there, so I don't feel कि this information should be going out on the internet. ये कितनी सी बोतल में? 35 कैलोरीज. Okay. So the taste was okay. It was good, I would say. और फिर ये मैं फ्रूट वॉश करके ऊपर ले आई थी, और बहुत ज़्यादा मीठे थे ये ग्रेप्स और ये बेरीज. मुझे ग्रेप्स पसंद है, और बाकी जो मेरी फैमिली है वो ये बेरीज ज़्यादा शौक से खाती है. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर. इंशाल्लाह, सी यू गाइस वेरी सून. बाय.